Before start a new lesson, we will discuss about the previous lesson. In previous lesson, we have studied about corrosion. Corrosion is slow and continuous eating away of the metal by the surrounding medium. It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and moisture. We have also studied about the rusting. What was the rusting? Rusting was the corrosion of iron. The important condition for the rusting is moist air, mean air having water vapors in it. To continue these concepts, today we will discuss about the prevention method. How to prevent rusting. इन्हीं कॉन्सेप्ट को देखते हुए अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर ये मॉइस्ट एयर की वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन होती थी तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कि हम आयरन को कैसे रस्ट से बचा सकते हैं और मॉइस्चर से कैसे बचा सकते हैं. Let's start our lesson, that is prevention of the corrosion. There are many ways to prevent the corrosion or the rusting of the iron, but here we will discuss 4. Number 1, removal of stains. Number 2, paints and greasing. Number 3, alloying. Number 4, metallic coating. We will discuss all of them one by one. Removal of stains. As you know, the region of the stain in an iron object act as the site of the corrosion. If the surface of the iron is properly cleaned and stains are removed, it would prevent rusting. Paints and greasing. Greasing or painting of the surface can prevent the rusting of iron. With development of technologies, modern paints contain a combination of chemicals called stabilizers that provide protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effect. जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कहते नए जो पेंट आए हैं, इन पेंट में कुछ इस किस्म के केमिकल हैं जो एज ए स्टेबलाइज़र काम करते हैं. वो न सिर्फ रस्टिंग से बचाते हैं बल्कि वेदर के और एटमॉस्फेयर के जो इफ़ेक्ट हैं उनसे भी महफूज रखते हैं ऑब्जेक्ट को. अलॉइंग. एज यू नो, अलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद one or more other metals or non-metals. Alloying of iron with other metals has proved to be very successful technique against rusting. Example. The best example of alloying is the stainless steel, which is a good combination of iron, chromium and nickel. Metallic coating. The best method for protection against the corrosion of the metals exposed to acidic condition is coating the metal with other metals. Examples. Corrosion-resistant metals like zinc, tin and chromium are coated on the surface of iron to protect it from the corrosion. It is the most widely applied techniques in the food industry where food is tin packed. The containers of the iron are coated with tin to give it longer life. आपने देखा होगा कि जो फूड पैक होते हैं जिन टिन में, जिन बॉक्सेस में, और वो टिन के बॉक्स जो हैं वो एक्चुअल में आयरन के हैं और कोटेड किए जाते हैं टिन से या जिंक से या क्रोमियम से, और उनको लॉन्गर लाइफ देने के लिए कि ज़्यादा देर तक वो सही रहें. और दीज कोटिंग जो है वो की जा सकती है किससे, फिजिकल मेथड से भी और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फिजिकल मेथड ऑफ कोटिंग. इन दिस कोटिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोटिंग, जिंक कोटिंग and tin coating. Zinc coating, it is also called galvanizing. The process of coating a thin layer of the zinc on iron is called galvanizing. This process is carried out by the dipping a clean iron sheet in a zinc chloride bath and then heating it. After this iron sheet is removed, rolled into molten zinc metal bath and finally air cooled. Advantages. Advantage of galvanizing is that zinc protects the iron against corrosion even after the coating surface is broken. यानी कि आपके जो कोटिंग सरफेस है वो किसी वजह से अगर डैमेज भी हो जाए, टूट फूट जाए, तब भी ये उसको बचा के रखता है, इसलिए इसके ज़्यादा एडवांटेजेस है गैल्वेनाइजिंग के. टिन कोटिंग. इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन ए बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर्स. यूजेस. Such sheets are used in the beverage and food cans. Disadvantages. The tin protects the iron only as long as
its protective layer remains intact. Once it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rusts rapidly. यानी कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो एज़ कम्पेयर टू गैल्वेनाइजिंग, कि इसकी लेयर अगर थोड़ी सी किसी वजह से डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो जो आयरन है इनसाइड वो एक्सपोज हो जाता है वाटर मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, और इस तरह से एक गैल्वेनिक सेल जो एस्टेब्लिश होता है और रस्टिंग शुरू हो जाती है, जो जिसके लिए ज़रूरी था वो कंडीशन इसको मिल जाती है। जबकि गैल्वेनाइजिंग में ऐसा नहीं है। गैल्वेनाइजिंग में हमारे प्रोटेक्ट लेयर जो होती है वो डैमेज होती नहीं है अव्वल तो, और दूसरा अगर हो भी जाए तब भी उससे बचत हो जाती है। तो यहाँ तक होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।